Hello everyone, welcome to Vigyan Academy. So today we are going to discuss the answers of the NDA 2024 that is held in today. So in this video, first of all we will discuss some basic questions that had come in the paper. उससे पहले अगर आप लोग क्वेश्चन की लेवल को देखते हैं तो आपको अगर आपने पेपर ठीक से देखा होगा तो आपको पता चल ही गया होगा मैथ्स का पेपर इस बार थोड़ा सा मुझे इजी लगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर था इस बार। 2024 का जो पेपर वन था उससे मुकाबले तो ये पेपर थोड़ा इजी था। तो आई होप कि जो काट ऑफ है काट ऑफ पूरा तो इस बार हाई जाएगा मैथ्स के लिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल काट ऑफ की बात करते हैं, पिछले साल तो आपको पता ही है 301 था। तो इस साल आप इस साल में आप लोग उम्मीद कर सकते हैं 310 के आसपास प्लस समथिंग प्लस माइनस उसके आसपास आपका काट ऑफ रहने वाला है। तो काट ऑफ तो इतना बाद में पता चल ही जाएगा। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ दो तीन सवाल डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी गोइंग टू द ऑल द आंसर्स ऑफ द ऑल क्वेश्चंस, फर्स्ट ऑफ ऑल let us take so I have taken the set D, the set D of the question paper. So if you observe this question, basically these are very एकदम देख के ये क्वेश्चन हो जाता है। अब अगर ये 44 वाला जो क्वेश्चन है ये भी अगर आप देखते हैं तो इसको देख के आपको एक बात तो पता चल गया होगा कि पी क्यू आर सिमेट्रिक। अगर आप इस सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं ना, तो ये पी एंड क्यू आर सिमेट्रिक देन इट इज इंप्लाइंग दैट पी यूनियन क्यू इज सिमेट्रिक। तो ये वाला तो जरूरी नहीं है ना, ये पी एंड क्यू बोथ आर सिमेट्रिक, it does not imply that p union q will be a symmetric matrix. So you can say that this statement is wrong. So if you observe carefully, they have asked you to select the answer using the code given below. तो अगर ये सेकेंड वाला ऑप्शन गलत हो गया है तो बाय यूजिंग द ऑप्शन एलिमिनेशन यू कैन सी दैट द ए इज रॉन्ग, सी इज आपका सी सॉरी बी इज रॉन्ग एंड डी इज रॉन्ग। तो सी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इस दो ऑप्शन को अगर आप नहीं भी देखते हैं तो इसी वाले ऑप्शन से आपको ये वाला क्वेश्चन हो जाता था। ठीक है, फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि अगर p टाइम्स ऑफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू होता है किससे, qth टर्म ऑफ द qth एपी, देन tp प्लस q आपको पूछा गया है तो ये तो जीरो होता है, बेसिक प्रॉपर्टी है एपी का। ये भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया ही था, है ना। तो ये वाला आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ साथ में और दो तीन सवाल आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अभी ये क्वेश्चन देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का एक बेसिक सा सवाल है। आप लोगों को देख के ये पता चल गया, अगर आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा बहुत भी रिवाइज किया होगा ना, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप ये पूरे जो इक्वेशन है या पूरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको आप cos 17 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका बन जाएगा tan 17। ये आपका बन जाएगा 1 प्लस tan 17। अभी आपको तो पता ही है ना, tan 45 आप इसको लिख सकते थे, है ना। तो ये भी आप इस तरह से लिख सकते थे tan 45 इंटू tan 17, क्योंकि tan 45 का वैल्यू तो 1 होता है, हमको सबको पता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan a माइनस b। सो इफ यू सी tan a माइनस b अगर आप लोग इसको करते थे 45 माइनस 7 तो कितना हो गया आपका, यहाँ पे हो जाता था आपका 28। तो ये वाला सवाल तो देखिए आप ऐसे कर सकते थे। तो अभी अगर इस सवाल को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑप्शन पे आपका देखिए तो 1028 या तो यहाँ पे है नहीं ना। तो अभी आप क्या करेंगे, देखिए 1028 को तो आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, cos 62 सेम ही तो है। तो इससे ये वाला डी वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता, तो इतना आसान था ये सवाल भी था। और अगर आप लोग और दो सवाल अगर आप देखते हैं, ये वाला सवाल देख लीजिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछ लिया है इन लोगों ने। यहाँ पे आपको पूछा गया है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर हैविंग ऑल डिजिट्स आर ऑड। सो आपको पता ही है ऑल नंबर्स आर ऑड मतलब क्या क्या नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। अभी रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं ये तो नहीं बोला गया, तो यार कंसीडरिंग रिपीटेशन इज अलाउड। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, मैंने आपको बॉक्स मेथड भी पढ़ाया था। तो यहाँ पे अगर 4 बॉक्स आप बना लेते हैं तो 5 नंबर्स आर देयर, तो हर बॉक्स में 5 5 डाल दीजिए। तो कितना होगा 625 इज द आंसर। कितना बेसिक सा सवाल था, आप देख लीजिए ये वाला है। उसके साथ साथ अगर आप ये वाला सवाल भी आप लोग देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स पी एंड क्यू, टू मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखिए पी क्यू पी, अगर आप लोग क्यू और पी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका, टू गलत हो गया। टू अगर आप लोग गलत कर लेते हैं, टू वाला ऑप्शन अगर आप लोगों को पता चल गया कि गलत है, तो इससे आप लोगों का ये बी का ऑप्शन चला गया, डी का ऑप्शन चला गया, तो बचा ए और डी में से कोई से ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए और डी में से अगर आप लोग देखते हैं, अगर आपको ए वाला सपोज आपने करेक्ट मान लिया, पी क्यू इज ए नल मैट्रिक्स, पी क्यू अगर नल मैट्रिक्स है तो क्यू पी भी ऑब्वियसली नल मैट्रिक्स ही होगा। नल मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स भी नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो अगर वन करेक्ट है तो ये वाला भी करेक्ट होगा। तो
वन अकेला तो करेक्ट हो नहीं सकता, तो क्या करेक्ट होगा देन 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये वाला भी एकदम बेसिक सा सवाल था। फिर एक क्वेश्चन हम लोगों ने मैट्रिक्स से फिर और एक बेसिक सवाल पूछा है, यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। पेन उठाने की भी जरूरत वहां पे नहीं थी। तो ये कुछ पास से सवाल, बहुत बेसिक से सवाल थे जो आप लोगों को मतलब ऐसे देख के आंसर मिल गया होगा। आई होप आप लोगों ने करेक्ट किया भी होगा ये सारे सवाल। अभी देखिए, अभी हम लोग सारे जो 120 क्वेश्चन था उसका हम लोग आंसर की डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको कौन सा क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर है वो दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर पहले। उससे पहले अगर आप देखिए, आप लोग कई बच्चों का भी लग रहा होगा कि उनका क्वालिफाई हो जाएगा, कईयों को लगा होगा कि इस साल शायद नहीं होगा। तो जो लोगों का हो जाएगा, तो अभी जो एसएसबी का जो इंटरव्यू आने वाला है उसमें भी ज्यादा वक्त तो है नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर वो भी हो जाना चाहिए। तो आप लोग उसके लिए भी हमको हमारे पास अप्रोच कर सकते हैं एसएसबी इंटरव्यू गाइडलाइंस के लिए भी। और जो बच्चे फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर गिवन है, आप लोग कॉल करके देख सकते हैं। अभी देखते हैं हम लोग कुछ कुछ जो सवाल है उसका जो आंसर की है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले वाला सवाल तो बहुत बेसिक सा सवाल है, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आई एम टेकिंग द सेट डी ऑफ द क्वेश्चन पेपर। देखिए यहाँ पे जो ये एनडीए 20 सॉरी एनडीए 2024 का जो पेपर 1 था उसमें भी इससे ही क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो इससे कौन सा प्रॉपर्टी लगाने वाले थे आप लोग, ये वाला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो रहा है, पाई बाय 2 के बराबर होता है। बस इसको रिप्लेस करना था, तो आपको ये आंसर सी मिल जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखते हैं, इसको भी आप लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते थे। इसका आंसर होगा आपका बी, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बी। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोग देखते हैं, तो आप लोगों को तो पता है ना, साइन ए बाय ए अगर करते हैं, साइन बी बाय बी करते हैं, साइन सी बाय सी अगर आप लोग क्या कर लेते हैं, तो इसको कोई कांस्टेंट के बराबर आप लोग पकड़ सकते थे 1 बाय के। देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर ए बी सी को आप लोग रिप्लेस कर देंगे, तो साइन ए बाय कॉस ए मिल जाएगा, साइन बी बाय कॉस बी, साइन सी बाय कॉस सी, टेन ए इक्वल टू टेन बी इक्वल टू टेन सी मिल जाएगा। तो टेन ए इक्वल टू टेन बी इक्वल टू टेन सी कब होगा, जब वो ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आपके पास तो फॉर्मूला पता ही है, √4/√3/4 a स्क्वायर, वहां पे बैठा दीजिए तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो इसी के साथ आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं, तो इसमें भी अगर आपसे ऑप्शन अगर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए इस वाले सेशन में हम लोग सिर्फ वो आप लोगों को आंसर की देने की कोशिश कर रहे हैं। जो जो ऑप्शन करेक्ट है वहाँ मैं आपको मार्क करके दूंगा। कुछ कुछ सवाल हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, लेकिन पूरा 120 क्वेश्चन डिस्कस करने का अभी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग बाद में भी कोई डिटेल वीडियो में पूरा 120 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल वी आर ओनली मूविंग विद द आंसर कीज। 4 के लिए कौन सा होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगर आप देखते हैं, तो इसके लिए आपके पास आएगा 2√c। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगर आप देखते हैं, फिर से भी ट्रिगोनोमेट्री का ही सवाल है। इसमें आप लोगों को दो ऐसा x का वैल्यू मिलेगा जिसके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप लोग देखते हैं, तो या तो पता ही है आपका cos का 0 कब होता है x के लिए, 2n+1 π/2 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप लोग देखते हैं, tan a + tan b + tan c इक्वल टू k दिया हुआ है। cot a cot b cot c क्या होगा, इसको आप लोग सॉल्व करके ट्रिगोनोमेट्री के जो हम लोगों ने क्लास में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, तो उसके वजह से आपको ये आंसर मिल गया होगा 1/k। sin 12 और sin 48 का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है। इसमें आपका जो आंसर होगा वो आपको क्वेश्चन नंबर 9 में ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, √5 - 1/8। तो इसको मैं नहीं आएगा इस तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है। तो ठीक है, अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। अभी ये सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को डिस्कस किया था। साइंस की मदद से आप लोग अगर cos से डिवाइड कर देते तो tan a - b का फॉर्मूला आ जाएगा, उससे आपका आंसर मिल जाएगा cos 62। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप लोग देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक सवाल है। मैंने देखिए आप लोगों को बोला भी था, कॉम्प्लेक्स नंबर का दो सवाल आप लोग उम्मीद कर सकते थे। ये तो a+ib का जो क्वेश्चन होता है उससे, और एक आपका ओमेगा का कॉन्सेप्ट, ओमेगा का कॉन्सेप्ट। और मैंने मॉडुलस का भी बताया था, लेकिन हालांकि मॉडुलस का आया नहीं, लेकिन ओमेगा का एक क्वेश्चन आ गया जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। और ये a+ib का क्वेश्चन आ गया, इसको आप लोग देख सकते थे आराम से। इसका ऑप्शन होगा 1। और अगर रियल पर आपसे यहाँ पे मिल गया है, तो शायद 1/2 कौन सा ओमेगा आएगा। तो ओमेगा के लिए अगर आप रियल पर देखे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा 0। 13 के लिए कॉमन डिफरेंस पूछा गया है। कोई एक टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, फर्स्ट एंड सेकंड फिफ्थ टर्म्स आर जेपी में दिया हुआ है। इसको आप लोग एपी और जीपी की दोनों का कॉन्सेप्ट की मदद से सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 13 का डी। 14 का सवाल अगर आप लोग देखते हैं उसी से आ जाएगा। अगर आपको वहां पे जब सीरीज मिल गया, तो वहां पे 5 टर्म्स का सम भी आपको मिल जाएगा। 75 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आपके पास होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 इज करेक्ट। 16 के लिए आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी 1 इज करेक्ट, u + v w। अभी इसको अगर
u प्लस v इंटू w करते हैं तो a प्लस b a माइनस b हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो 20 हो जाएगा, वहां से इसका सोल्यूशन आपको 1 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 आपके पास है कि 17 तो एक बढ़िया सवाल था। इसको मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ऐसे सवाल में अगर आप लोगों को कुछ मतलब दिक्कत आ रही है तो x का वैल्यू कुछ मान लीजिए, तो x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तब भी ये सेटिस्फाई होगा। x का वैल्यू 1 होने से ये भी इक्वल तो हो रहा है ना, तो अगर 1 पुट कर देते थे तो अगर आप लोग इसको देख लेते थे तो इसका a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यानी hp में आ जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल किसमें आएगा, ap में आ जाएगा, तो वहां से a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यानी hp में करेक्ट आंसर। 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, और रूट का सवाल है ये भी आपका सी हो जाएगा। 19 का अगर आप लोग देखते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन अगर 19 का जवाब आपको मिल गया 20 का भी वहां से आ जाता है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग पकड़ के ये क्वेश्चन को हल कर सकते थे। कीजिएगा तो आपका ए एडजॉइन ए जो आएगा ये वाला मैट्रिक्स आएगा, तो हम लोगों को पता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइन ए बाय डिटरमिनेंट ए होता है, तो वहां से आपका ऑप्शन नंबर ए 20 के लिए भी आ जाएगा। 21 अगर आप लोग देखते हैं, इंस्क्रिप्ट इन ए सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 100, BC है कोऑर्डिनेट 6,8 एंड -8,6 रेस्पेक्टिवली, तो BAC का एंगल पूछा है, डायग्राम बना के आप लोग सॉल्व कर सकते थे। इसका वैल्यू आएगा 5/4 3/4, ऑप्शन नंबर सी। 22 के लिए आएगा ऑप्शन नंबर ए, उसी क्वेश्चन से हो जाएगा। फिर आप अगर 23 का देखते हैं, 23 के लिए 1 1 मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। 25 के लिए 3 7/3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। 25 अगर आप लोग देखते थे, मैंने आपको बोला भी था स्फीयर का डायमीटर का सवाल आएगा ही आएगा, स्फीयर का डायमीटर का सवाल आ गया, तुम लोगों को इसमें अगर वो स्फीयर का कॉन्सेप्ट लगाना था बस, वहां से आपका ऑप्शन नंबर बी 5√3/2 आएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। फिर उनको सेंटर अगर मिल गया आपको, सेंटर को यहाँ पे आपको सिर्फ बिठा के देखना है कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज करेक्ट, वहां पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। 27 अगर आप लोग देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्शन रेशियो, मैंने बार बार बताया था डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से आपका सवाल आने ही वाला है, तो वहां से भी आ गया। इसको आप लोग करके देखिएगा तो 27 का पी ऑप्शन करेक्ट आएगा। 28 एनडीए 1 में आया था एकदम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कुछ ऐसा आया था, तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, लास्ट वीक ही डिस्कस किया था। तो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एन स्क्वायर का वैल्यू निकालना था आपको, बस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। 29 अगर आप लोग देखते हैं फिर डायरेक्शन रेशियो का सवाल है, इसमें आएगा 0 1 माइनस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 30 के लिए अगर आप लोग देखते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा गया है, इसके आपका ऑप्शन नंबर टी विल बी करेक्ट आंसर। मैं फिर से बता रहा हूँ, हम लोग सिर्फ आंसर की डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो बाद में हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी हम मुझे सिर्फ आप लोगों को हेल्प करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आप लोग मालूम पड़ जाए। 31 अगर आप लोग देखते हैं, 31 के लिए तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 2 एंड 3। 32 वाला सवाल भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स बिटवीन √12 एंड √15 इज एन इनफाइनाइट सेट। ऑब्वियसली √12 और √15 के बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर मिल सकता है, बेसिक प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स का, तो वहां पे आगे आपका ए ऑफ ए या ए वाला तो करेक्ट हो गया। ये वाला अगर देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 1000 इज ए फाइनाइट सेट। हम लोगों ने क्वेश्चन इसके क्लास में डिस्कस किया था, हम लोगों का क्वेश्चन था सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स लेस देन 100 इज ए फाइनाइट सेट, हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो यहाँ पे आ गया 1000, बात तो एक ही है, अगर 100 पकड़ लीजिए या 1000 पकड़ लीजिए, माइनस में तो आ जाएगा ना, -1 -2, तो वो तो आप लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, तो वो तो इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग, तो वहां से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 ओनली। 33 अगर आप लोग देखते हैं, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हम लोग ने पहले डिस्कस कर लिया था ना, 555 तो 625, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। 34 वो देखिए मैंने बोला भी था, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के क्यूब रूट ऑफ नीचे क्वेश्चन आ ही जाएगा, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा, इसका 1 प्लस ओमेगा को आप माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते थे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप माइनस ओमेगा लिख सकते थे, -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर 100 हो जाएगा, वहां से ओमेगा को कॉमन लेके आप लोग सॉल्व कर सकते थे। 34 का ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। 35 अगर आप लोग देखते हैं, ठीक है, इस बार रिलेशन फंक्शन से ज्यादा मतलब मुझे मिला नहीं, इस पर तो हम लोगों ने पूछा था ऑन टू वन फंक्शन, यहाँ से तो सवाल आया नहीं है, तो सेट थ्योरी का ये सवाल जो 35 का ये वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन था, ए बी अगर नल मैट्रिक्स है तो कौन सा करेक्ट होगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस भी किया था लास्ट वीक क्लास में। तो आइदर ए और बी विल बी नल मैट्रिक्स, अगर ए और बी कोई भी नल मैट्रिक्स हो जाए तो ए भी तो नल मैट्रिक्स होगा ही ना, जरूरी ये नहीं है कि दोनों को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी अगर आप लोग देखते हैं, इन द एक्सपेंशन 1 plus x to the power p 1 plus x to the power q with the coefficient of x cube is 35, then what is the value of p plus q? ऑब्वियस सी बात है, तो जो हमारा टर्म होगा p plus q ct आएगा, उसका वैल्यू दिया ही हुआ है, 35 दिया हुआ है, ऑप्शन बिठा के आप लोग देख सकते थे 5, अगर आप लोग 5 बिठा दे तो 5 ct तो 35 नहीं आएगा, 7 अगर बिठा देते 7 ct इज द 35 इज द करेक्ट आंसर, तो p plus q का वैल्यू कितना होगा 7, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 34 अगर आप लोग देखते हैं, हाँ ये वाला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। 38 अगर आप लोग देखते हैं, देखिए log x क्यूब log x to the power 5, ये एपी में है क्या, नहीं ऑब्वियसली है,
तो ln x क्यूब माइनस ln x अगर करते हैं तो वहां पे जो मिलेगा ln x5 और ln x क्यूब करेंगे तो सेम ही मिल जाएगा, तो वहां से आपको मिल जाएगा एपी में है। ये बोला गया पी क्यू आर कैन नेवर बी इन जीपी, तो ये बोथ 1 एंड 2 विल बी करेक्ट आंसर। 38 के लिए बी सी होगा आपका करेक्ट आंसर। 39 अगर आप लोग देखते हैं, इसमें ये a प्लस आई का फॉर्मूला है, यहाँ से अगर आपको ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप लोग निकाल लेते हैं तो इससे आपका एक a प्लस आई फॉर्म आ जाएगा। तो इफ यू गेट द a प्लस आई फॉर्म यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x प्लस x एंड y का वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो वहां से आपका मॉडुलस ऑफ z कितना होगा आ जाएगा। सम बिठाना था सिर्फ 40 का ऑप्शन नंबर बी 0 इज द करेक्ट आंसर। 41 अगर आप लोग देखते हैं तो इसमें पूछा गया इरेशनल नंबर कौन सा होगा 10, 20, 2.5, पूरा तीनों के तीनों इरेशनल नंबर होगा। हम लोगों ने एक वाल यहाँ से देखा भी था इरेशनल नंबर का, तो 41 का बेसिक में हम लोगों ने देखा था, ये एक बार याद कीजिएगा। 41 का ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। उसी तरह ट्रिगोनोमेट्री का एक सवाल है, 42 का आपका होगा 0 बी, और इसे आपका ये सवाल भी आ जाएगा। 43 का आएगा आपका p प्लस क्यू p माइनस क्यू, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 44 अगर आप लोग देखते हैं, 44 में क्या बोला गया हम लोग डिस्कस कर लिया था पहले ही, तो इसे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 45 इफ a and b are two non-empty sets having 10 elements, so ये तो पता ही है p to the power 10 होगा, 10 स्क्वायर कितना होगा 10 10 to the power 10 स्क्वायर विल बी 100। तो व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर हम लोगों ने बेसिक क्लास में डिस्कस कर लिया था, इसका आंसर होगा ए 0। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फोर स्ट्रेट लाइंस एंड अ सर्कल इन इज बिटवीन लाइंस एज वेल एज सर्कल एंड लाइन, सो इसका ऑप्शन नंबर सी 14 विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। 48 अगर हम लोग देखते हैं, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू ट्वाइस टू द फर्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन 48 के लिए। 49 व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल रूट्स, अभी इसमें रियल रूट्स पूछा गया है, तो अगर आप यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे करेंगे दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा आपको लेस देन 0 मिलेगा, इसको सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं। तो लेस देन 0 आएगा तो कोई यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नॉन विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49। 50 के लिए अगर आप लोग देखते हैं वेन डायग्राम से ये सवाल हो जाता था, हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस भी किया था जो यहाँ पे 3 सेट आता है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग वेन डायग्राम यूज कर सकते थे। 50 के लिए ऑप्शन नंबर ए 60 विल बी करेक्ट आंसर। 51 के लिए फिर से वही समेशन का सवाल आ गया, इसमें बी ऑप्शन नंबर बी 95 विल बी करेक्ट आंसर। 52 के लिए अगर आप लोग देखते हैं मीन सीरीज और रिप्लेस दैट व्हाट इज द न्यू मीन, मीन पूछा है, आप लोग यहाँ पे मीन का कॉन्सेप्ट लगा के देख सकते थे, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 53 प्रोबेबिलिटी का सवाल है, ऑप्शन नंबर बी 15/32 विल बी करेक्ट आंसर। 54 अगर देखते हैं फिर से वही प्रोबेबिलिटी का सवाल है, देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी का बेसिक सवाल बहुत ज्यादा आया हुआ है, तो इसमें आपका 7/12 आएगा बी। 55 अगर देखते हैं फिर से प्रोबेबिलिटी का सवाल है, इसमें आएगा आपका 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट आएगा, तीनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट मिलेगा 55 के लिए। 56 अगर आप लोग देखते हैं तो परफेक्ट डैश फिर से वही प्रोबेबिलिटी का बेसिक सवाल है, इसमें आपका ऑप्शन मिल जाएगा 29/36, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 57 occurrence of a disease in an industry, फिर से वही सवाल है प्रोबेबिलिटी का, इसमें आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 53/3125 विल बी द करेक्ट आंसर। 58 अगर आप लोग देखते हैं फिर से वही प्रोबेबिलिटी का एक एकदम रैंडम क्वेश्चन ही पूछा गया है कि किसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा कितना नहीं होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 3 परफेक्ट डाइस फिर से वही प्रोबेबिलिटी का सवाल, तो 59 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये सवाल है, आप लोग याद कीजिएगा, हम लोगों ने किया था बहुत सारा सवाल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी 9 एंड 2/3 विल बी करेक्ट आंसर। 61 वो आपका इंटीग्रेशन का थोड़ा कैलकुलस का अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन था, मॉडुलस का x² - x - 2 दिया हुआ है, तो 61 का ऑप्शन नंबर डी 10/3 विल बी करेक्ट आंसर। 62 का आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 इज करेक्ट आंसर। और हमारा ऑड इवन फंक्शन तो हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया हुआ था, दोनों फंक्शन आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑड फंक्शन ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 विल बी करेक्ट। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो आपको पता चल गया कि जीटी जो है वो ऑड फंक्शन है, तो ये -पाई से पाई के लिए आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल है जीटी, जीटी का वैल्यू कितना होगा, वो ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन कितना होगा 0, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 65 के लिए अगर आप लोग देखते हैं एच जेड 0 का इक्वल टू ऐसे आपको दिया हुआ है गया है, तो इसका वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर डी 2 इज करेक्ट आंसर। 66 के लिए अगर आप लोग देखते हैं वहां पे आएगा ऑप्शन नंबर सी 0, दैट इज करेक्ट आंसर। 67 के लिए आप लोग अगर देखते हैं तो 67 के लिए आएगा ln2, दैट विल बी सी करेक्ट आंसर। 68 के लिए अगर आप लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इफ यू मूव टू द 67 सॉरी 60 8 तो हो गया 69, देन यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 1 बी। 70 के लिए अगर आप लोग देखते हैं यूएक्स वीएक्स का वैल्यू पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए दैट इज करेक्ट। 71 के लिए ये फिर से एपी का सवाल आ गया, एक्स वाई जी पी इन एपी, तो अभी अगर आपको पता ही है ये वाला बेसिक सवाल है, एक्स वाई
Z अगर GP में है तो आपको तो ये पता चल गया होगा ln x ln y ln z will be in AP। तो ln x ln y ln z अगर AP में है तो 1 अगर प्लस कर दीजिएगा तो 1 प्लस ln x 1 प्लस ln y 1 प्लस ln z में भी AP में होगा। उसका रेसिप्रोकल अगर आप किसी AP का ले लीजिए तो वो रेसिप्रोकल किस में आ जाता है, HP में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 72 के लिए ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, इसको आप रिप्लेस कर सकते थे 1 प्लस ओमेगा को आप क्या लिख सकते थे माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा, यहाँ पे आएगा माइनस 1, माइनस को कॉमन ले लीजिए। फिर अगर आप रो ऑपरेशन भी करते हैं C1 C2 C3 तो ये जीरो आ जाएगा। तो अगर जीरो आ गया तो डिटरमिनेंट में उसका क्या आएगा, जीरो। तो 73 अगर देखते हैं इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 74 इंडिया, इंडिया हम लोगों ने किया था ना, इंडिया किया था उसी में से क्वेश्चन आ गया है। और पोजीशन में क्या क्या होगा आप लोग देख सकते थे, आराम से ये क्वेश्चन हो जाता था आपका। 1 3 और 5 के पोजीशन में आपको और क्या बोल रिप्रेजेंट पावर दिस कॉम्बिनेशन भावेल शुड बी ऑक्युपाइड, भावेल को बिठाना था। बाकी जगह में आपको कॉन्सोनेंट को बिठाना था। ऑप्शन नंबर डी 12 विल बी करेक्ट आंसर। इक्वेशन भी हम लोगों ने देखिए इंडिया और इक्वेशन हम लोगों ने दोनों किया था क्लास डिस्कशन में, तो वो सवाल भी आ गया। इससे आपका ऑप्शन नंबर सी 1440 विल बी करेक्ट आंसर। 76 में आप लोग अगर देखते हैं तो इसमें आपका जीरो, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 77 में अगर देखते हैं आपका परम्यूटेशन का बेसिक सा सवाल है, हम लोगों ने किया था ना, किसी टीम टीम में अगर आपको 15 प्लेयर है उनमें से आपको 11 का सिलेक्ट करना है सच दैट वन प्लेयर इज कॉमन टू ऑल द परम्यूटेशन। तो ऐसा ही सवाल है, n-2 कोर्सेस आउट ऑफ n कोर्सेस आपको सिलेक्ट करना है। 2 कोर्सेस आर कंपलसरी ना, सो n-2c n-4 हो जाएगा वहां पे। तो इसको सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा n-2 n-c डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 78 के लिए अगर आप लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 79 के लिए अगर आप लोग देखते हैं इसमें आपका हम लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। 80 में अगर देखते हैं पीजे स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी हम लोगों ने किया था पहले ही, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस। 81 अगर आप लोग देखते हैं नल वेक्टर पूछा, इज नल वेक्टर पूछा है इक्वल टू इफ दिस वन इज नल वेक्टर, इसके आपको ऑप्शन नंबर ए वेक्टर से इस बार काफी कम क्वेश्चन पूछा है, बस यही है। तो ये 3 सवाल आप लोग आराम से कर सकते थे। 81 के लिए ए, 82 के लिए आप लोग देखते हैं बी, 83 के लिए जीरो। 84 के लिए अगर आप लोग देखते हैं रेगुलर हेक्सागन के बारे में पूछा गया, रेगुलर हेक्सागन मतलब सारे साइड इक्वल है, तो इसमें आपको -4 ए ऑप्शन मिल जाएगा 84 के लिए। 85 के लिए अगर आप लोग देखते हैं सी बूट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। 86 के लिए अगर आप लोग देखते हैं ये एक रेक्टेंगल बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए। 87 के लिए अगर आप लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर बी 1 इज करेक्ट। 88 के लिए अगर आप लोग देखते हैं इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी 10 इज करेक्ट। इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है, ऑल्सो डायमीटर एंड सर्कल हम लोगों ने डायमीटर वगैरह सेंटर वगैरह सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। 1 एंड 2 इसमें आपका करेक्ट आ जाएगा। थ्री वाला गलत हो जाएगा, थ्री वाला अगर आप लोग देखते हैं तो ये वाला गलत होने से पूरा थ्री का जो बी सी डी का गलत हो जाएगा, तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग देखते हैं 89 का, तो वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, अगर आप थ्री भी करके देख लेते तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इनमें से ये गया ये गया ये गया, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी लेफ्ट, इट इज द करेक्ट आंसर। 90 के लिए अगर आप लोग देखते हैं फिर से वही सवाल है जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया भी था, ऐसे ही क्वेश्चन और एक आया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी 90 विल बी करेक्ट आंसर। तो 91 वाला सवाल मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली, क्योंकि मैंने बोला था रिग्रेशन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैंने ज्यादा बोला था लेकिन एक ही आएगा, लेकिन वो आ गया। क्या होता है 2024 का वन अगर पेपर आप लोग देखते हैं, वहां से रिग्रेशन का जो सवाल आया था उसमें थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन ये वाला बहुत आसान आ गया। आप लोगों को पता है ना बी एक्स मतलब क्या होता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट अगर आप लोग इसका देखते हैं तो स्लोप निकालना होता था, तो इसमें आपका स्लोप 3 आ जाएगा, इसमें स्लोप 2/7 आ जाएगा। को बोला गया है 7 टाइम्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x on y रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ bxy 7 byx बोला है ना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 7 मल्टीप्लाई करना था, 7 7 कट जाएगा, 3 + 2 5 मिलेगा आंसर। तो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ जानना था, वहां से 91 का क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया। इरिगेशन का ये सवाल बहुत मतलब एक बार टाइम कंज्यूमिंग वाला सवाल नहीं आया था इरिगेशन से, लेकिन इरिगेशन से ज्यादा से सवाल टाइम कंज्यूमिंग होता है। 92 अगर आप लोग देखते हैं तो ये वाला सवाल तो आसान है। ये इसका अगर आप लोग देखते हैं ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे स्क्वायर स्क्वायर गया है, तो उसके साथ क्या होता है n into n plus 1 2 n plus 6 divided by 6, इसको इक्वल टू दिया हो तो आपको इस 130 दिया हो तो आपको 119 into 20 19 कर लेंगे, तो n का वैल्यू आएगा आपका 19, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 93 के लिए अगर आप लोग देखते हैं प्रोबेबिलिटी का ही सवाल है, 1/15, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 94 के लिए अगर आप लोग देखते हैं इसके लिए आपके पास आएगा 9/29, दैट इज करेक्ट आंसर। 95 के लिए प्रोबेबिलिटी का सवाल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 96 के लिए अगर आप लोग देखते हैं बॉक्स कंटेन्स 2 ब्लैक 4 येलो बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री ऑफ द सेम कलर। अभी देखिए सेम कलर पूछा है 3 बॉल, तो ये 2 को तो आपको कंसीडर करना ही नहीं है क्योंकि 2 ब्लैक बॉल ही है। 4 में से 4 सी थी, 6 में से 6 सी थी, टोटल आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा 12 सी थी, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर 1/6 ए विल बी करेक्ट आंसर। 97 के लिए अगर आप लोग देखते हैं यहाँ पे बोला है ए कैन हिट ए टारगेट ऑफ 5 टाइम्स इन 6 शॉट्स, बी कैन हिट ए 4 टाइम्स
इन 5 क्वेश्चन शी कैन इट बेसिक सा सवाल है। देखिए पी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना था, क्या पूछा है देखिए ए एंड सी में हिट बट बी मे नॉट हिट। तो अगर ये मिस बोला है तो अगर पी बी कॉम्प्लीमेंट निकालना था, पी ए तो आपके पास यही है 5/6, पी बी आपके पास 4/5 दिया था तो पी बी कॉम्प्लीमेंट 1/5 होगा, 1 माइनस पी सी 3/4 आएगा, इसका वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8, ये विल बी करेक्ट आंसर। 98 का अगर आप लोग देखते हैं तो 98 का जो ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 99 के लिए ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग देखते हैं तो ये वाला भी आपके पास ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 100 के लिए मीन डेविएशन का सवाल है, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन वी हैव डिस्कस सो मच इन क्लासेस। तो 100 का सवाल मीन डेविएशन का तो आसान सा सवाल आपके पास हो जाएगा, 2.5 विल बी करेक्ट आंसर। 101 के लिए अगर आप लोग देखते हैं cos x स्क्वायर विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 102 के लिए ऑप्शन नंबर ए रूट एक्स, अगर आप लोग 101 सॉल्व कर लेते हैं तो 102 वहां से मिल जाएगा, रूट एक्स विल बी करेक्ट आंसर। ये वाला सवाल तो एकदम बेसिक है, ये किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सवाल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा ही है। तो f 0.99 अगर आप यहाँ पे बैठा के देखते हैं तो जीरो आएगा, 0 माइनस 0 0, तो दोनों में जीरो ही आएगा। यहाँ पे 1 माइनस 1 आ जाएगा तो जीरो, तो जीरो होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो f is continuous at x equal to 0, fx is continuous at x equal to 1, इसमें तो neither one ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। हम लोग अपना इंटीग्रल पॉइंट हम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए पढ़ा हुआ है। 105 अगर आप लोग देखते हैं इसके लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 106 के लिए अगर आप लोग देखते हैं वहीं से आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 107 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 108 के लिए 4/3 स्क्वायर यूनिट विल बी द करेक्ट आंसर, पैराबोला का सवाल है। 109 के लिए अगर आप लोग देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री, मैंने बोला भी था एक सवाल तो आएगा ही आएगा, लेकिन मैं इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन उम्मीद कर रहा था ऑर्डर डिग्री के लिए। ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, पोलिनोमियल फॉर्म में ही है, पोलिनोमियल फॉर्म में तो डायरेक्ट ही डिग्री में ऑर्डर मिल जाता है। फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, उसका पावर 1 है तो 1 एंड 1 विल बी करेक्ट आंसर। डी नहीं होगा इसमें, 1 होगा ऑप्शन नंबर ए। 110 के लिए अगर आप लोग देखते हैं डिफरेंशियल, वही डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला है आपको, इंटीग्रेशन लगा के सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की मदद से इसको सॉल्व कर सकते थे, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 111 के लिए अगर आप लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दो सवाल आया हुआ है, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है, तो इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगा के करना था, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। 112 के लिए मैंने बोला था आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से सवाल आया है इस बार। ऑन टू वन फंक्शन से क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से आ गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 114 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 150 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 116 के लिए जीएम का सवाल है तो नॉन रहेगा, मैंने बोला भी था ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 107 के लिए अगर आप लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 118 के लिए अगर आप लोग देखते हैं तो बी। 119 के लिए आ गया ऑप्शन नंबर बी 0, और 120 के लिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए 1/4 विल बी करेक्ट। तो यही था आपका जो एनसीईआरटी पूरा मैथ्स के पेपर का। आप लोग एक बार अपने आंसर से मिला के देख लीजिएगा कितना करेक्ट आया कितना रॉन्ग आया, आप लोग एक बार एनालिसिस करके देख लीजिएगा। लेकिन मैं इस बार सरप्राइज यही हूँ क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो वहां से पूछना सही था, लेकिन नहीं पूछा है। लेकिन हालांकि ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन बहुत सारे पूछा है, जैसा कि उम्मीद था। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से भी बहुत सारे सवाल पूछा गया है, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये वाला रहा आपका पूरा एनालिसिस 120 क्वेश्चन का। तो आप लोग अगर आपका आंसर अगर क्वालिफाइंग मार्क्स के हिसाब से आ रहा है तो आप लोग जो अभी सीडीएस जो आपका एसएसबी का इंटरव्यू आ रहा है उसके लिए आप लोग प्रिपेयर करिए। उसके लिए आप लोग हमारे हमको रीच कर सकते हैं, इस नंबर पे आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट करके एक बार देख लीजिए। और अगर आपको फिर से रिस्टार्ट करना है पूरा, हमारे जो नया बैच है वो स्टार्ट होगा 9 सितंबर से, तो आप उसके लिए भी रिसर्च कर सकते हैं इस गिवन नंबर के ऊपर। तो अभी जो दूसरा पेपर है गेट का, उस पेपर का एनालिसिस भी आपको मिल ही जाएगा इसी वीडियो में, पूरा क्वेश्चन का आंसर की उसमें मिल जाएगा। तो उस वाले क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के लिए मैं अपने हमारे इंस्टीट्यूट के सुनील सर को बोलूंगा। थैंक यू थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एज वी नो कि आज आपका एनडीए और सीडीएस का पेपर रैप अप हो गया है।
NDA 2 and CDS 2 2024. So I hope कि सबका एग्जाम अच्छा गया हो, डिसेंट गया हो. Everybody has done well in their paper. So today we will be discussing the answer key for the GAT paper, the answer key for the GAT paper, and I will be giving you a rough idea of what the cutoff might be for this year. Okay, so let's start. See, now before starting, let me tell you something that this year the vacancies for NDA 2 2024, we had a total of 395 candidates. Okay, and last in the last April shift, the cutoff approximately went down to 290s, in the 290s for NDA, because the paper was really tough. If we call it even moderate to tough, then the paper was more on the tougher side in the last April shift of the exam. But looking at the feedback from the students this time, and जो भी स्टूडेंट से मुझे ऑनेस्ट फीडबैक मिला है, और मैंने पेपर का पैटर्न देखा है लास्ट ईयर से, लास्ट अप्रैल से कंपेयर करके, the paper has been comparatively easier. The UPSC has been really kind to the students this time. The paper has been comparatively easier. तो आप मान सकते हैं कि लास्ट टाइम का कट ऑफ ऑफिशियली तो आया नहीं है, बट लुकिंग एट द मार्क्स ऑफ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, इट वाज समवेयर अराउंड 290s. But इस बार since the paper was slightly on the easier side, you can say that the cutoff will be around 20 marks higher. So yes, it was we can say that the paper was kind of moderate this time, because there were tricky questions. And there were certain easy direct questions as well. So mila jula ke, you can say that the paper was kind of this time it was on the moderate side. It was not very tough like what UPSC had presented you in the month of April. Now, going on to the questions, स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास में ध्यान दिया है, स्टूडेंट जिन्होंने क्लास में अच्छे से पढ़ा है, उनको मैं एक बात ध्यान से बता दूं कि देखिए, जो सवाल इस बार आए हैं, आपके करीब करीब 40 odd questions they have come like सीधा सीधा, they have come common from whatever was taught in the class, the notes and the PIQs that were discussed with you all. क्योंकि if we look at the questions and the pattern, जो मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ करीब करीब 40 सवाल, ये 40 सवाल आपके कॉमन आए हैं, एज इन जो भी क्लास में पढ़ाया गया था, whatever notes were given, whatever pointers were given to you, and whatever previous year questions were discussed from whichever topics, उन टॉपिक से बहुत सारे कॉमन सवाल आए हैं. हाँ, तो प्लीज एक चीज I think the students will learn from this exam is that, you see, 40 questions is not a very small number. 40 questions is a really really big number. 40 questions is a really big number in the GAT paper. GAT में the marks that you get for each question is 4 marks. Okay, and 40 questions, 4 marks makes it around 160 marks, right? I hope everybody is getting it. Whatever marks you are getting for each correct answer, 40 questions is a huge number. So if 40 questions are coming common from whatever topics that were discussed in the class, whatever PYQs were given, whatever short notes that were discussed with the students, जो भी आपके साथ छोटे मोटे pointers और टिप्स आपके साथ शेयर किए गए हैं, जो भी आपको समझाया गया है, अगर उससे आपको 40 सवाल कॉमन आ रहा है, then it is a very very big number, एक डिसाइडिंग फैक्टर है. इसीलिए आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स की रोज क्लास आया करो, क्लास मिस मत करो. आधे बच्चे even if they're in the offline class, they'll still try to do it from their phone online. I have always and always watched for the fact कि अगर क्लास में हो तो क्लास आया करो, रोज बात सुना करो जो बता रहा हूँ. Because now when I'll go through, I'll whatever I was teaching in polity, certain things that I had stressed on during teaching in the class, और वहां से सीधा सीधा सवाल आया है ना. So you have to be consistent. So let's now
start with a few answers to the questions that are shown up in the GAT paper. And आप लोग आपके answers मिला लीजिए. Please match your answers with these, and you can accordingly calculate your marks to get a rough idea. This is not the official answer. Of course, official will come from UPSC, but we are giving you an idea what are the correct answers or the correct concepts to the questions. और आप इससे अपने answers मिलाइए, अपने marks calculate करिए, and then you can make a further plan and move on. तो चलिए let's start. पहला क्वेश्चन देखिए. पहला क्वेश्चन आपका है which one of the following diseases is caused due to the deficiency of vitamin D. विटामिन डी शरीर में कम होने से कौन सा डिजीज होता है? ठीक है. The answer is सीधा सीधा rickets. Vitamin D is for bones. Rickets is a disease of the bones of the joint. So the answer is rickets. Okay. Now, which among the following separation techniques is used for blood tests in diagnostic laboratories? Diagnostic labs में blood के components को separate करने के लिए कौन सा technique use होता है? It is centrifugation. Blood is centrifuged to separate the blood cells from the plasma. Okay. Now, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, आपको दो दो लेंसेज दिए गए हैं. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज. ठीक है. और दोनों लेंसेज का आपको फोकल लेंथ दे दिया गया है. एक है 2.5 diopter और एक है आपका -2 diopter. ओके. एंड यू हैव बीन आस्क्ड दैट व्हाट इज द combined focal length of both the lenses. Okay. Now we will use the formula for the combination of focal length, which is 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2. If we go ahead with that formula, then the answer that we will arrive to is option B, minus 0.5 meter. This is the focal length for the combination of these two lenses, जिसका power हम लोग को already दे दिया गया है. ठीक है. Now look here. यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि in which schedule of the Constitution of India provisions related to disqualification on grounds of defection are given. मतलब India has 12 schedules. Here it is asked that in which of the schedules there are provisions or there are the grounds for disqualification of candidates based on defection, which is basically changing parties. ठीक है. Now look at the person here. ये जिसका भी question paper है, the person has marked this as option A, 9 schedule. Now class में I have shouted, I have screamed at the pitch of my voice. I have screamed at the pitch of my voice when I was teaching DPSPs, when I was teaching how the land reforms were placed in the 9th schedule, that the 9th schedule is something related to judicial review से immunity of laws. Whoever this person is, this is why attention in class is very important. The person has marked 9th schedule, which is wrong. The correct answer for this is the 10th schedule. 10th schedule has the anti-defection law. Wait a second. Yeah, sorry for the interruption. So as I was saying, when I was shouting at the pitch of my voice कि 9 शेड्यूल में लॉस को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून किया जाता है, student did not pay attention, and as a result he or she has marked that this is the 9th schedule which has the anti-defection law. And even I have taught you कि 6th schedule I have taught you while I was teaching you the CA. I've told you CA does not apply in 6th schedule and the ILP regions. So 6th schedule is also wrong, and the 11th schedule is related to the panchayat. I have discussed that as well. So bachta kya hai? What is left with you? What is left is the 10th schedule. 10th schedule has the anti-defection law. So the answer is that the 10th schedule has grounds of disqualification for defection. Okay. Now another question, which is directly from whatever I have taught. This is a question which even I have discussed in PYQs in two different subjects. Money bill is a common topic of economics and polity, and I have taught that this particular question or many other questions related to money bills in both the subjects.
Now what it is saying is that the money bill, in money bill, Rajya Sabha has limited power in that, and it basically says that after how many days does the bill is deemed to be passed, even if the Rajya Sabha does not pass it. Here also, I have shouted at the pitch of my voice that in the case of money bills, Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha, much more powerful. And the Rajya Sabha's opinion does not matter on whether the money bill will pass or not. It is solely dependent on the Lok Sabha. Okay. And the number of days is 14 days, 2 weeks. I have repeated it number of times I have repeated the same thing that if the Lok Sabha passes the money bill and the money bill goes on to Rajya Sabha, the Rajya Sabha's opinion whether the Rajya Sabha passes it or not does not matter at all. If the Rajya Sabha will not pass the money bill and return it to Lok Sabha will still pass it. And if the Rajya Sabha does not act within 14 days, after 14 days, the bill is deemed to be passed. So the correct answer is option C. Okay, and also we will be starting with the new batch for the NDA and CDS mentorship program for the 2025 examination. And the new batch is starting from 9th of September 2024, where all the subjects and all the topics, including current affairs, which concern the importance for the CDS and NDA examinations. All these subjects and current affairs are holistically and covered in a very robust manner throughout the guidance course. And we also have guidance for SSB interview. So after I finish discussing the answer key, after you match the answers with your answers, and you have an idea that whether you might clear the exam this time or not, then you can surely come and join us for guidance for the SSB interview, because once the result is out in around 3 to 4 weeks, after that you have a maximum time of couple of months or a bit a couple and a half before the SSB interview takes place, other than OT of course. For NDA and the IMA, INA and AFA, the interview starts uh, within 2.5 to 3 months after the declaration of results. So yeah, this is the information. This is the new batch. The date 9 September 2024. For any guidance, please come to us. Please enroll, and these are the contact numbers on which you can contact us for further details. Okay. Now let's look at the next questions. Here, what they're basically asking that which of the following statements are correct. So the correct statement here is that quartz is soluble in water. Option C. Now let's go to next question. Which one among the following processes is not part of the chemical weathering? Chemical weathering basically means weathering of rocks due to chemical reactions. Which of the following is not a part of that? So the answer to this question is thawing. Thawing is a process which is not part of the chemical weathering of rocks. What is chemical weathering of rocks? Which is basically the breakdown of rocks by various chemical processes, by chemical stress. Okay. Okay. The next question. What is the maximum number of electrons that can occupy the first shell of an atom? We have an atom has different shells, 1s2, 2s2, and so on. So the first shell, the number of atoms that can be present in the first shell is 2. Option A is the correct answer. Here, let's look at which temperature does the liquid water show maximum density. They are asking a particular temperature at which water in its liquid form will show the maximum amount of density.
The answer to this question is 277 Kelvin. Option B. Okay. Now, the next question. We have been given 4 elements. We are asked which among the following has a valency of 3. Carbon is 4, oxygen 2, nitrogen 3, sodium 1. So, the correct answer is option C, nitrogen. Now, next question. Which one among the following is an example of oxidation reaction? Okay. Oxidation reaction basically which means addition of oxygen in the most layman's term is addition of oxygen or the gain of an electron or loss of hydrogen, whatever you call it. So we have 4 options. Now, just go by common sense. Just apply common sense here. Throughout your school life, you have read one thing that iron gets oxidized. And what happens? The iron gets rusted. There is rusting of iron. Why? Because the iron gets oxidized. Isn't it? So, what should be the correct answer? The correct answer is rusting of iron. It is an example of oxidation reactions. Understood? Okay. Now, the next question is which one among the following fertilizers is a source of nitrogen? Which among the following fertilizers is a source of nitrogen? This question, this is a topic which you have also studied in biology, chemistry, and even in economics, where you study about agriculture and the subsidies on fertilizers and everything. So, the correct answer here is very obvious. The correct answer is urea, because urea is the only compound in this whole list which has nitrogen in its composition. Okay. So, if it has nitrogen in its composition, then this fertilizer is the source of nitrogen. See, when I am discussing these questions, please notice one thing. This is one thing that I have shouted in my class. I have literally shouted in my all my classes that whenever you solve the questions, especially in a UPSC exam, most of the questions you can solve by applying your knowledge and your common sense. Here, I just applied my common sense. Even if you did not know what is the source of what, if you just know that urea has nitrogen, then of course urea has to be the source of nitrogen. So, D is the correct answer. Now, in this question, there are certain statements given about aluminium. Aluminium is an element, a metal, and what they're asking is that which of the following statements is not correct. Here, it's very simple. You just have to see the last option says the aluminium's valency is 2, but the valency is actually 3. So, आँख बंद करके the correct answer of this question is D, that the valency of aluminium is 2. It's not 2, it is 3. The next question is the elemental composition of diamond. What is it? The elemental composition of diamond is nothing but it is pure carbon. Diamond consists of pure carbon. Now, which of the following is an example of chemical change? 4 options are given, 4 different phenomena, and we are asked which is a chemical change. So, let's look at it. Sublimation, melting, and heating of iron rod. What are they causing? They are causing changes in the physical state of the item. So, these are not chemical changes. Now, mixing of NaOH and HCl, it is a neutralization reaction, a chemical reaction. So, this is a chemical change. Option D is the correct answer. Mixing of NaOH and HCl is a chemical change. Again, we have discussed this question earlier as well. They are asking the combined focal length of two lenses.
Okay, so we basically apply the formula 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2, and the answer that we arrive is B, minus 0.5 meters. Now question number 62. Question number 62 basically says that the AC mains domestic supply current in India changes direction in every how much seconds. We have an AC mains AC, which is alternate current. Okay? We have the AC mains domestic supply, and this current changes its direction. The alternate current changes its direction after a certain interval of time in India. So what is the correct answer? The correct answer is option D. It changes after every 1 by 100th of 1 second. Now, next question. It's a numerical from physics. What they are basically asking is that there is a block, of mass 2 kg, and it is resting on a rough horizontal surface. The speed of the block at a particular instance is 10 meter per second, and it comes to rest. The velocity becomes 0 after a distance of 20 meter. After a distance of 20 meter. Now, what is the magnitude of the frictional force that applied on this block to bring it to rest from motion? So we have to find out this force using two formulas. First, we have to use S is equal to ut plus half at square, and then F is equal to ma. So using these formulas and using the values that were given to us in the question, we arrive at an answer which is option A, 10 Newton. Okay. Okay, now 64, the next question, which says that there are certain phenomena that are mentioned here. So now it says that which of the following phenomena, or which of the following cases, they satisfy the Newton's law of cooling. Okay, what is Newton's law of cooling? It basically says that the heat loss is proportional to the difference of heat between the two bodies. So now which of the four uh, statements they satisfy Newton's law of cooling? The answer is option C, 1 and 4. Ice is melting in a glass full of water and a cup of coffee is allowed to cool on a table. The next question says that there is a skydiver in this picture, okay, and he has two forces Q and P in these two directions. They are asking that which of the following statements is correct about the two forces. So the correct answer is option C, which says that after the parachute opens, P, which is basically the gravitational force, it remains the same because gravitational force will always remain the same. It's constant. Okay, and then the other force, which is Q, this force, it increases. Of course, you're free falling, you're falling with a greater speed, but once the parachute will open, you will become more tightened, and it will be tougher for you to fall down in a free fall manner. So this will increase Q and P will remain constant. So option C is the correct answer. Now, next question.
Vijayanagara rulers claim that they were ruling on behalf of a certain deity. Who is he? Now, even if you don't know who, on the behalf of whom the Vijayanagara rulers are ruling, if you studied art and culture and art and architecture of India carefully, you will know that the Vijayanagara rulers built the Virupaksha temple. है ना? So, and it's a very famous architecture of India. So, using your common sense, the correct answer this is that option C, Sri Virupaksha. The Vijayanagar rulers claim that they were ruling on the behalf of the deity Sri Virupaksha. Okay. Now, next question. Domingo Pace describes a certain king in the following words: of medium height and of fair complexion and good figure, rather fat than thin. He has on his face signs of smallpox. Identify the king from the given options below. ठीक है? Domingo Pace is a traveler. He gave certain characteristics, descriptions of a king that he saw in India. We now have to identify who is that king. The answer to this question is Krishna Deva Raya, because Domingo Pace, he visited the land of India, the Indian subcontinent, during his reign only. Yes. So the correct answer is Krishna Deva Raya. He fits the description given by Domingo Pace. Now again, this question: in which schedule of the Indian Constitution the anti-defection law has been mentioned? Which schedule? The answer is the 10th schedule. Now, next question. There are two statements. The first statement says that there is an Attorney General of India. His duties are to give advice to the government of India upon such legal matters and to perform such other duties of a legal character as may from time to time be referred to or assigned to him by the President of India. What it's basically saying is that Attorney General is like the lawyer of the Indian government who performs certain legal duties on behalf of the government of India, and on whatever legal duty is assigned to him by the President of India. So this statement is a correct statement. Statement 2 is Solicitor General of India is the secondary law officer of the country who assists the Attorney General and is himself assisted by several additional Attorney Generals of India, which is a correct statement. The Solicitor General of India is second in command, or you can say it's a secondary law officer second to the Attorney General. He assists the AGI, and also he or she himself is assisted by many additional Solicitor Generals of India. This is a correct statement. Now, so here they are asking which of the statements are correct. The answer is option C, both 1 and 2. Now, the next question on parliamentary committees. Another topic. I said again and again, that UPSC has a different kind of love and affection or attraction towards the parliamentary committees. And they have a history of giving factual questions from the parliamentary committees in India. Okay. And as a matter of fact, when I was discussing the PYQs, जब मैं PYQs करवा रहा था आप सबको पॉलिटी के पार्लियामेंट के PYQs कराते टाइम मैंने 2 सवाल कराए ही है, और मैंने बोला भी था कि पॉलिटी के वेटेज जितना भी ऊपर नीचे हो जाए, इसका इससे एक ना एक क्वेश्चन 90% आना ही आना है. ठीक है, तो ये टॉपिक के साथ फॉलो रहना, मैंने बार बार बोला था. तो now if you have made a mistake here, then I cannot do anything about it, क्योंकि मैंने repeatedly I have screamed at the pitch of my voice again. Now let me, now what it says here is that there are 3 committees. Now it says that which of these committees does not have members from the upper house of the parliament. Please concentrate, does not. No members from upper house or Rajya Sabha of parliament. Now if you look here, the estimates committee does not have any member from Rajya Sabha, it has members from Lok Sabha only. So the correct answers are Public Accounts Committee and Committee on Public Undertakings. So which is the correct option? The correct option is option A, 1 and 2.
Only these two committees have mem- uh, oh sorry, uh, they're asking that which has owner no members from upper house. The answer is estimates committee. The answer is C, 2 only, because 1 and 2 have members from both Lok Sabha and Rajya Sabha, but the estimates committee has members from Lok Sabha only, no members from Rajya Sabha. So the answer is option C, 2 only. Only the estimates committee. And sorry for the mistake. Answer number 71, question number 71. It says there is a vehicle, it starts moving along a straight line path from rest. A vehicle starts moving from rest. In the first t seconds of time, it moves with an acceleration of 2 meter per second square. And then in the next 10 seconds, it moves with an acceleration of 5 meter per second square. The total distance traveled by the vehicle is 550 meters. So what is the value of the time t, which is the first t seconds for which it was moving 2 meter at 2 meter per second square of acceleration? So what is the answer? The answer is option A, 10 seconds. The value of t in this question is 10 seconds. Now, okay, now let's come to question number 72. For question number 72, the answer is C, 1000 kg per meter cube. For 73, the answer is C. Sorry, for 73, the answer is option D, 8 rupees. For 74, the answer is option C, the transfer of energy due to temperature difference. In the 75th question, the answer is option C, a ratio of 1:1. '76, the answer is option D, which is basically the answer is option D, which is 10 kilonewtons. 77, the answer is option A. 78, the answer is option B, 200 meters. For question number 79, the answer is option C. James Watt's invention converted the steam engine. For question 80, the answer is option D. CN Tower. In question number 81, the answer is 1 only, because Gandhiji recommended the provinces to be divided on a linguistic basis. That's true. But the Constituent Assembly did not recommend it. They did not recommend it. They recommended it on the basis of the ease of administration. So the answer is only one, A. 82, the answer is C. Trichy to Vedaraniyam on the Tanjore coast. 83, the answer is Pochampalli. From Pochampalli, Vinoba Bhave received the first donation of Bhudan movement. 84,
Maize was first introduced in India by Portugal and Italy. Portuguese, they brought in a lot of important things like maize, tobacco, pineapple, so on and so forth. Now, some pairs of mountain passes and mountain ranges are given. So the correct answer to 85 is A, 2 only. So 2 was the only correct pair, which was the Banihal Pass and the Pir Panjal range. Question number 86. The correct answer is option D, which says these soils have less clay factor and hence can support a wide variety of crops and vegetables. 87. The answer is option A. A has all the correctly matched options: A to 4, B to 3, C to 2, D to 1. Question number 88. Different names of cyclones and countries. We have to match them. So the correct answer is option A, which basically says hurricane in USA, Billy Billy in Australia, Baguio in Philippines, and typhoons in China. Question number 89. Question number 89. The correct answer is option C, 1 and 2. Option 3 is wrong. Question number 90, which says which one of the following rocks is both igneous and metamorphic? So the correct answer is option C, which is gneissoid. Now, this is a debatable option, but according to the sources that we have gone through, the most probable answer for this question is gneissoid, which is both an igneous and a metamorphic rock. Now, question number 91. Which of the following statements about lysosomes is not correct? The correct answer is B. It's not correct. They do not break down all inorganic materials. So this is the correct answer. This is the incorrect statement. This is the correct answer. Option B. Now, question 92. The correct answer is option C. Mitochondria and plastids. Both of them have their own genetic material. Question number 93. The correct answer is option B. Option B is ligaments. Ligaments joins two or more bones. I hope you guys are matching the answers and you have a fair idea कि कितना आपको मिल रहा है marks इस बार. So yes, once again, our batch is starting from the 9th of September. Once you get the idea of how much you're scoring and you plan ahead कि आगे क्या करना है and whether you want to prepare for the next, if you have the age limit, if you have the eligibility to appear for CDS in 2025 as well or NDA in 2025 as well, then our new batch starts from 9th of September, the upcoming 9th. You can contact us on the given contact numbers and enroll with us.